Hey Mariam, can you hear me? I hope I'm audible enough. I have no idea about that. All right, that's great. So a lot of people, a lot of emojis. That's how it goes. Walaikum salam. How are you guys? I hope you're doing good. It's officially the end of first week of July, so I'm sure that this is the right time to start your preparation. आप लोगों के schedules बन चुके होंगे, कौन सा subject कैसे करना है वो तो साथ साथ ही पता चलता है. This is one thing that I want to share right now, and that is that बहुत सारी चीज़ें end पे इंसान को पता चलती हैं. You're not a perfect human being. आपको अभी पता होगा कि कौन सा सिलेबस किस तरह करना है. So you just have to take one step. आप एक कदम बढ़ाओगे तो आपके पास और नॉलेज आएगी और लोगों से अल्लाह ताला आपको कनेक्ट करेंगे और जिसके थ्रू आपको वो बात समझ आ जाएगी. कोई एक बंदा, कोई एक टीचर परफेक्शनिस्ट नहीं होता. उसकी 70 to 80% बात समझ आ जाती है, लेकिन 20% जो आप उनके लेवल पे नहीं पहुंच पाते बिकॉज ऑफ सर्टन रीजंस, तो आप उसको किसी और के थ्रू सर्च करने की कोशिश करो. इंटरनेट इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, उसके थ्रू सर्च करो. आस्क योर फ्रेंड्स, योर कलीग्स, बट डोंट गिव अप ऑन समथिंग जस्ट बिकॉज आपको समझ नहीं आ रही. तो अपने प्लान्स रेडी रखें, उसको एग्जीक्यूट करें. एक कंपल्सरी, एक ऑप्शनल, या फिर साइमल्टेनियसली 2 ऑप्शनल्स, या इस तरह करके आप काम करें अपना, एंड यू बिगिन योर जर्नी. We are already done through our first lecture. Our first lecture comprised of feminism, waves of feminism, first wave, second wave, third wave, United Nations conferences on women. That was done in the last lecture. I had already provided you guys with the links. तो अगर आप लोगों को कुछ चाहिए तो आप पीछे उस लेक्चर की तरफ चले जाएं. Side by side, I also got some messages on English essay from you all. There are so many good people in this group who are going to help you out with the basics of English essay. लेकिन English essay के लिए जो मैं बात बार बार हर किसी को बताती हूँ कि आप किसी भी एक अच्छे से टीचर को, अपने दोस्त को, अपने कुलीग को who has a good grip ऑन दिस लैंग्वेज, उसको अपने चेक करवाएं एसेस, बिकॉज उसके अलावा आपको नहीं पता चलेगा कि आप क्या गलती उसके अंदर कर रहे हैं. और हर किसी का इंग्लिश का लेवल, उसकी कॉम्पिटेंसी डिफरेंट होती है. आपकी ग्रामर ठीक है तो इट इज़ पॉसिबल कि दूसरे बच्चे की ग्रामर ही ठीक ना हो. सो देयर आर अ लॉट ऑफ फैक्टर्स जिसकी बेसिस पे आपके ऐसे चेक होते हैं. ऐसा नहीं होता कि आपने एस्से का पेपर किया, उसको पसंद आ गया पहला पेज, उसने आपको 40 मार्क्स दे दी. ही हैज़ अ कंप्लीट शीट जिसके ऊपर सारे डायमेंशंस लिखे होते हैं. अगर आप उन डायमेंशंस को पूरा कर देते हैं तो उसके बाद आपके मार्क्स कैलकुलेट होते हैं. मतलब इफ़ आई हैड 43 इन एस्से, ये नहीं हुआ कि उसने 40 देने के बाद सोचा ओ 3 नंबर और दे देते हैं, बड़ा खूबसूरत एस्से लिखा है इसने. नो, ही हैज़ नंबर ऑफ फैक्टर्स जिसके वो मार्क्स दे रहा होता है. एंड में जब वो टोटल करता है तो वो जितने भी मार्क्स बनते हैं वो एंटर कर देता है. इट्स नॉट लाइक कि वो वहाँ मज़े से मार्किंग कर रहा होता है. इट हैज़ अ स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. सो प्लीज़ काइंडली आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप एक अकेडमी में जाके एसएस के 8 या 10 लेक्चर्स ले लें. तो उससे शायद आपको समझ ज़रूर आ जाएगी कुछ बेसिक्स, लेकिन उसके अलावा आप जब तक लिखेंगे नहीं, आप जब तक चेक नहीं करवाएंगे. चेक किससे करवा रहे हैं? वो आपके कॉलेज का टीचर भी हो सकता है, वो आपके स्कूल, हाई स्कूल का टीचर भी हो सकता है. काफ़ी प्रोफेसर्स आर रिस्पेक्ट वर्दी. मैंने जिससे चेक करवाए थे वो CSS फेल किया था उन्होंने 3 दफ़ा, लेकिन मुझे उन पर यकीन था कि उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है and she is the one who can check my essays. So please अपने कैपेबिलिटी, अपने इलाके को, अपनी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए काइंडली हाथ हिलाएं, लोगों से बातचीत करें, पूछें कि आपके कितने चार्जेस हैं, सर आप क्या लेते हैं, सर आप क्या करते हैं, सर आपके क्या क्राइटेरिया है जिसकी बेसिस पे आपके करते हैं. एंड कीप मूविंग योर हैंड्स. You should not sit down over there. I've seen few people
I want to say that out loud here कि I've seen few people जो कि criticize करते हैं कुछ लोगों को for charging money or something like that. अगर कोई भी इंसान अपने हालात की वजह से आपसे चार्जेस ले रहा है तो प्लीज़ एक टीचर होने के नाते उसकी रिस्पेक्ट करें. और हाँ, अगर आप समझते हैं कि नहीं वो चार्जेस ज़्यादा हैं तो आप प्लीज़ उस टीचर के पास मत जाएं. लेकिन ये जो हमारे एक एरिया में माइंडसेट बन चुका है कि कोई उस्ताद है वो अगर किसी स्टूडेंट से चार्ज कर रहा है तो इट इज़ पॉसिबल कि क्या पता उसकी घर की लिविंग उस चार्जेस से होती हो. तो आपको सही उस्ताद मिलना ज़रूरी है, लेकिन किसी उस्ताद की आप बेइज्जती ना करें, ठीक है. हर कोई फ्री लेक्चर्स हर दफ़ा नहीं प्रोवाइड कर सकता. ये ग्रुप एक बहुत अच्छी ब्लेसिंग है हमारे लिए दैट इट हैज़ कनेक्टेड अस ऑल, बट इट इज़ पॉसिबल दैट सम ऑफ द टीचर्स जो यहाँ पढ़ा रहे हों इंक्लूडिंग माई सेल्फ, शायद वो बाकी चीज़ें कहीं और जाके पे लेके दे रही हूँ. क्यों? क्योंकि हर किसी की ज़रूरियात डिफरेंट होती हैं एंड अ टीचर इज़ अ टीचर. आपको किसी की सर्विसेज चाहिए तो उसकी रिस्पेक्ट भी करें, क्योंकि आप कोई सर्विस किसी कंपनी में जाके देते हैं. सो इफ़ यू आर सेइंग कि नहीं मुझे हर चीज़ फ्री चाहिए तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल. लेकिन हाँ, साइड बाई साइड वाइजली भी आपने अपने पैसे स्पेंड करने. ये नहीं करना कि जस्ट बिकॉज आपको समझ लग रहा है कि ओके दिस इज़ एन अकेडमी और दिस इज़ समथिंग, अच्छा ये इतने पैसे दे रहे हैं तो मेरा CSS क्लियर हो जाएगा. CSS क्लियर करने के लिए कोई अकेडमी एक मैजिशियन लोग बैठे हुए नहीं है. एवरीवन देयर इज वर्किंग हार्ड. आपने अपनी कैपेबिलिटी अपने दिमाग के थ्रू जज करना है और अल्लाह ताला पे ये फैसला छोड़ना है कि अल्लाह ताला मैं कौन से लोगों की तरफ जाऊं, मुझे हेल्प करें कि मैं सही लोगों की तरफ जाऊं जो मुझे वाकई अपनी मंजिल तक पहुंचने में कामयाब करें और मुझे फैसिलिटेट करें. सो काइंडली please focus on your preparation, connect to the right people, and अगर वो सही लोग आपसे अगर अपनी एनर्जीज के मुकाबले में थोड़ी सी कॉस्ट मांग रहे हैं तो प्लीज़ डोंट डिसरिस्पेक्ट देम, और अपने टाइम को भी गलत लोगों के थ्रू वेस्ट नहीं करना. दैट इज़ द ओनली थिंग जो मैं आज शायद काफ़ी दिनों से सोच रही हूँ कि मतलब ये आजकल के माशरे में हमारे चल रहा है. गलत लोग भी हैं, सही लोग भी हैं. काइंडली सही लोगों की तरफ जाएं, लेकिन किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना आपने, क्योंकि आपने किसी और के लेवल पे नहीं गिरना. ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. लेट्स स्टार्ट विद जेंडर स्टडीज़. Today our topic is liberal feminism, liberal theory, radical theory. इनकी जो 6 की 6 theories हैं उस पर हमने काम करना है. उसके अलावा feminist movements in पाकिस्तान, इसके ऊपर हमने क्विक ओवरव्यू लेना है. ये मेरा सीक्वेंस इस तरह इसलिए क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं. इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्योंकि मुझे मेरे उस्ताद ने इस तरह पढ़ाई थी तो मैं भी आप लोगों को इसी तरह पढ़ा रही हूँ. सो इफ़ वी हैव इनफ पीपल राइट नाउ वॉचिंग, I'll go to the next पेज, और मुझे फिर इस पेज के ऊपर कमेंट्स नज़र नहीं आएंगे. सो काइंडली लेट मी नो इफ़ आई शुड प्रोसीड टू द नेक्स्ट पेज और समथिंग लाइक दैट. फेमिनिस्ट थ्योरीज हमने आज स्टार्ट करनी है. लिबरल फेमिनिज्म, रेडिकल फेमिनिज्म, साइको एनालिटिकल फेमिनिज्म, पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म, मेंस फेमिनिज्म, ये सारी 6 की 6 करनी है जिसमें से, और यस मार्क्सिस्ट और सोशलिस्ट फेमिनिज्म, ये सब हमने करना है. मिसबा, आई विल रिस्पॉन्ड टू यू आफ्टरवर्ड्स. बेटे वर्ड्स लिखने की कैपेसिटी तो आपके ऊपर है. मैं तो पैराग्राफ्स पे बिलीव करती हूँ. आप पैराग्राफ्स 12 सेंटेंसेस का होता है, आप वो लिखें, और 3-3 पैराग्राफ्स एक टॉपिक के लिखें. एंड इट्स नॉट अबाउट डेली एफर्ट, वो आपके ऊपर. आप डेली करना चाहते हो डेली करो. आई वॉज द वन जो प्रेफर करता था कि वीक में 2 दफ़ा कर लो और ज़्यादा टाइम बैठ के कर लो रादर देन डेली कर लो. ऑलराइट, सो आई एम गोइंग टू दिस वेबसाइट. मैंने काफ़ी वेबसाइट्स पढ़ी और मेरे नोट्स तो नहीं थे, स्टिकी नोट्स थे जो कि 2 लाइनों के थे, तो उससे बेहतर और उसकी ही समरी इसके अंदर है. लेट मी जस्ट पिन दिस पोस्ट समहाउ. पिन कमेंट. अच्छा, अब मैंने पिन कर दिया है. अब जो भी बोलेगा कि मुझे लिंक नहीं मिला, मुझे लिंक नहीं मिला, सो दिस हैज़ बीन पिन्ड ओवर हियर. ओके, सो फेमिनिस्ट थ्योरी, अ समरी फॉर A लेवल सोशियोलॉजी. मैं आपको एक बात बता दूं कि अभी दिस गाय, आई थिंक मोहम्मद इब्राहिम, ही इज़ इन I don't know which group is he in. He has successfully qualified CSS and he has been allocated. He was saying that इस्लामियात के लिए उसने कुछ O levels की बुक्स भी फॉलो की, and that is true. OA levels की बुक्स काफ़ी अच्छी होती हैं, उनकी तालीम का मेयार बहुत ऊंचा होता है. So if you find something that is OA levels के ऊपर सिखाया जा रहा है, स्पेसिफिकली सोशियोलॉजी, तो
उसको प्लीज़ फॉलो करने की कोशिश किया करें. अच्छा, तो इसमें बेसिकली द इंट्रोडक्शन हियर इज़ दैट बेसिक्स आप लोगों को पता है. बेसिक्स ये हैं कि इनइक्वालिटी मेन और वुमेन के दरमियान जो है इट्स यूनिवर्सल, एंड सबसे बड़ा इनइक्वालिटी की सिग्निफिकेंट फॉर्म ही ये है कि औरत हमेशा सब्जुकेट होती रही है. लेट मी टॉक इन इंग्लिश नाउ, वो ज़्यादा ही उर्दू की तरफ चली गई हूँ. ओके, बेसिकली जेंडर नॉर्म्स को कहते हैं कि वो सोशली कंस्ट्रक्ट होते हैं, नॉट डिटर्मिन्ड बाय बायोलॉजी एंड कैन थस बी चेंज. जो भी चीज़ मेरी बायोलॉजिकली डिफरेंट है एज अ वुमेन एज कम्पेयर टू मेन, वो मैं चेंज नहीं करना चाहती और ना चेंज हो सकती है. फेमिनिज्म या जेंडर स्टडीज़ उसके ऊपर बहस ही नहीं करती. बहस वो सोशियोलॉजिकली जो सोशली कंस्ट्रक्टेड जो नॉर्म्स है हमारे, कि लड़की को ये नहीं करना चाहिए, लड़के ऐसे होते हैं, लड़कियाँ ऐसी होती हैं, जो पाकिस्तानी कल्चर में भी है और वेस्टर्न कल्चर में भी काफ़ी चीज़ें, दैट इज द थिंग जिसको वो टारगेट करते हैं. और उसको टारगेट करने के साथ साथ उसको डीकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं. वो चाहते हैं कि उन चीज़ों को ठीक किया जाए. ठीक है, मोस्ट ऑफ देम से कि जी पेट्रियार्की ये कि हर चीज़ के पीछे जो मसला है ना, वो है कि मर्दों को क्योंकि डोमिनेंस हासिल होती है. एंड इफ़ माई फैमिली हेयर्स कि मैं इस तरह की बातें कर रही हूँ, तो वो आके मुझसे पूछेंगे कि इफ़ एनीथिंग इज़ रॉन्ग विद मी. Patriarchy is the main cause of gender inequality. Women are subordinate because men have more power. This is somehow in some departments आजकल overall, अगर आप इतने rich नहीं हैं, अगर आप upper middle class से belong नहीं करते, तो most of the women उनके यही ख्यालात हैं and somehow power में रह के ऐसे होता है. So लेकिन हर बंदा ये नहीं कहता कि पेट्रियार्की इज द कॉज. हर बंदा ये नहीं कहता कि पार्ट ए इज़ द कॉज, पार्ट बी इज़ द कॉज, पार्ट सी इज़ द कॉज. हर बंदे के मुख्तलिफ ओपिनियन होते हैं. तो इसीलिए ये थेरीज बनी कि हर बंदा एक स्पेसिफिक टाइम पे जिस सोच के बारे में अपनी जहन को रखता था, राइट, कि मैं अभी 2019 में हूँ, मैं सोचती हूँ कि आजकल इनइक्वालिटी की मेन रीज़न ये है, तो इसके ऊपर एक थेरी बन दी जाएगी. क्योंकि आप लोग भी वही सोचते हो, एक यूथ ये सोचती है, तो वो एक थ्योरी कोई बना सकता है. लेकिन आफ्टर 15-20 ईयर्स मे बी हालात बदल जाए, मे बी टेक्नोलॉजी बदल जाए, मे बी रिसोर्सेज बदल जाए, जिसकी वजह से एक नई थ्योरी आ जाएगी और वो मेरी थ्योरी को चैलेंज करेगी कि आपने जो बोला था अपनी थ्योरी में वो गलत था. देखिए, आपने इस चीज़ को देखा ही नहीं, आपने इस फैक्टर को देखा ही नहीं. तो इसी तरह थ्योरी दूसरी थ्योरी को चैलेंज करती है. अच्छा, फेमिनिज्म इज अ पॉलिटिकल मूवमेंट. आप बाहर सड़कों पे निकलते हैं. इट एग्जिस्ट टू रेक्टिफाई सेक्सुअल इनइक्वालिटीज, ऑल्दो स्ट्रैटेजीज फॉर सोशल चेंज वेरी एनॉर्मसली. मेरी जो रेक्टिफिकेशन का प्रोसेस होगा मेरे माशरे के अंदर रहते हुए, वो शायद डिफरेंट हो, दूसरों के माशरे में रहते हुए शायद डिफरेंट हो. अच्छा, sorry, I'll just complete this and then we'll get back to your questions. अब अगर ये फिगर देख लें, there are 4 types of feminism: radical, Marxist, liberal and difference. मेनली इंपॉर्टेंट यही टाइप्स होती हैं, लेकिन CSS की सिलेबस में हमारे पास 2 और टाइप्स हैं, साइको एनालिटिकल एंड मेंस फेमिनिज्म. बहुत आसान है और उसको भी एक दफ़ा हम देख लेंगे. अगर हम इस खूबसूरत कलरफुल फ्लो चार्ट को देखें, सो वी हैव लाइक सो मेनी कलर्स ओवर हेयर. सो लेट्स स्टार्ट विथ फेमिनिज्म, द बेसिक्स. मैं अगर आप लोगों को क्यों ना अपने नोट्स बनाए तो इस तरह बनाएं, ठीक है. इसको छोटे छोटे सब पॉइंट्स में लिखें और इसको याद कर लें. कोई ज़रूरत नहीं है लंबी लंबी लाइंस लिखने के लिए, अनलेस और अनटिल आपका सीखने का स्टाइल ही वो है, तब आपको चैलेंज मैं नहीं कर सकती. द बेसिक्स ये है जी, इनइक्वालिटी बिटवीन मेन एंड वुमेन इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट आजकल के ज़माने में. एंड जेंडर नॉर्म्स सोशली कंस्ट्रक्ट हुए हैं एंड बायोलॉजिकली कुछ डिटर्मिन नहीं होता. ना ही फेमिनिज्म डिटर्मिन करती है कि बायोलॉजिकली लड़की के बाल ऐसे हैं, लड़के के. नोबडी केयर्स अबाउट दैट. सोशली कंस्ट्रक्टेड जो जेंडर नॉर्म्स है उसके ऊपर सारे चैलेंजेस हैं. एंड फेमिनिज्म इज अ पॉलिटिकल मूवमेंट. Why is this even a movement? Why does this movement even exist? It exists to rectify sexual inequalities and it also brings strategies for social change. लेकिन वो जो strategies हैं वो मेरे culture की vary होंगी, आपके culture की vary होंगी. So this is the generalized idea of feminism. Okay, then we have generalized idea of feminism. After the generalized idea of feminism, let's start with liberal feminism, the green color over here. Liberal feminism basically
मैं अगर इसके अलावा अपनी सादी ज़ुबान में बताऊं तो लिबरल फेमिनिज्म वाज स्टार्टेड बिटवीन 1960s and 70s when civil rights movement was there in USA, ब्लैक राइट्स मूवमेंट चल रही थी, तो उस वक्त औरतों ने कहा कि हमें भी अपने लिए राइट्स के लिए मूवमेंट्स लगानी चाहिए. वो कहती थी कि हमें हर जगह जो मर्दों को राइट्स मिल रहे हैं, इफ़ मेन आर गेटिंग द राइट्स इन एजुकेशन, इफ़ दे आर गेटिंग द राइट्स इन प्रॉपर्टी, इफ़ दे आर गेटिंग द राइट्स इन ऑफिसेज, तो हमें भी वो राइट्स दिए जाए. हमें वो उस तरह राइट्स नहीं मिलते, हमें उस तरह लिबरल तरीके से इक्वल राइट्स नहीं मिलते. अगर मर्दों को ये मिल रहा है तो मुझे भी ये मिलना चाहिए. ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज अगर इस डिपार्टमेंट में मेन को मिल रही है, वुमेन को भी मिलनी चाहिए. दैट्स ऑल व्हाट दे फॉट फॉर, दैट इफ ही इज गेटिंग दैट then I should also get it, right? And वो ये नहीं कहते थे कि आज सड़कों पे निकल जाओ और रेवोल्यूशनरी चेंज, रातों को हो जाने वाली चेंज हमें चाहिए. They don't want that. They wanted a slow and steady change, right? So liberal feminism do not seek revolutionary changes. They work within the existing structure. आपका जैसा भी institutional structure है उसके अंदर तहम्मुल से काम करते हुए they were telling कि हमें ये मर्दों के साथ comparison में चाहिए. Right? And then discrimination prevents women from having equal opportunities. They used to say that because there is a discrimination, हमें equal opportunities नहीं मिल रही, and both men and women are harmed by gender inequalities. और आप क्योंकि opportunities हमें नहीं दे रहे तो हम दोनों harm होते हैं फिर that's how they were saying. ठीक है, the creation of equal opportunities is the main aim of liberal feminist. उसकी वजह से हमारे पास सेक्स डिस्क्रिमिनेशन एक्ट एंड द इक्वल पे एक्ट आ गया था, बिकॉज ऑफ द लिबरल थ्योरी. उनकी मूवमेंट की वजह से ये सब आ गया था. लेकिन उनका मेन क्रक्स ये था कि प्लीज जो मर्दों को मिल रहा है अपॉर्चुनिटीज, हमें भी वो मिलनी चाहिए. हमें इक्वल वेजेस मिले, हमें एजुकेशन डिपार्टमेंट में चीज़ें मिले, हमें प्रॉपर्टी में अपने राइट्स ठीक तरह से मिले, जो लड़कों को मिल रहे हैं हमें भी वो मिले. दैट्स द एंटायर क्रक्स ऑफ लिबरल फेमिनिज्म. बहुत सुकून दे 1960s 1970s में उन्होंने बात की. बट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट अ सर्टेन टाइप ऑफ फेमिनिज्म, आपने उसकी गलती भी निकालनी है, आपने उसका क्रिटिक भी देना है कि वो क्या गलत कर रहे थे, और पेपर में भी आपने वो देना है इफ दे आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट. अब मैं नीचे आ रही हूँ बिकॉज लिबरल फेमिनिज्म ने नीचे दिया हुआ. सो दिस इज व्हाट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि बोलना वो क्या चाह रही थी. And they also try to eradicate sexism from the children's books and the media. बहुत सारी stories ऐसे होती हैं जिसमें हर चीज़ में लड़कियों को मतलब दिखाया जाता था कि cultural norms की वजह से they couldn't go out. उनकी story books थी, उनकी media थी, तो they also try to challenge that हर दफ़ा लड़कियों को ही उसमें subjugate ना किया जाए. And right. And then their ideas had the impact on women's life and mainstreaming हो गई. सबको पता चल गया कि liberal feminist बोलना क्या जा रही हैं. ठीक है, and then we don't have its critique here. क्रिटिक इसका यही था कि दे डिडंट फोकस ऑन द क्लासेस, द रेसेस. आपने ब्लैक वाइट वुमेन, उनके अलग अलग मसले मसाइल हुए. दे डिडंट टारगेट दैट. दे डिडंट टारगेट कल्चर्स, दे डिडंट टारगेट रिलीजन. उन्होंने क्लासेस को भी नहीं टारगेट किया. उन्होंने कहा कि जी जो लड़कों को मिल रहा है वो हमें मिले. बट देयर इज अ प्रॉब्लम हियर. द प्रॉब्लम हेयर इज कि अगर मैं डिफरेंट रेस से बिलोंग करती हूँ, जो औरतें फाइट कर रही हैं दे आर फ्रॉम द वाइट रेस, इफ़ आई एम फ्रॉम द ब्लैक रेस, मुझे क्या इम्पैक्ट होगा उस तरह? नहीं. इफ़ आई एम फ्रॉम द लोअर मिडिल क्लास और वो लोग अपर क्लास से हैं, जो वो जिसके लिए फाइट कर रही हैं, क्या उसके लिए मुझे भी उसी तरह का इम्पैक्ट और अपॉर्चुनिटी मिलेगी? नहीं. सो दैट वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट फ्लॉज ऑफ लिबरल फेमिनिज्म, दैट दे फॉरगॉट द क्लास डिफरेंसेस जो एग्जिस्ट करते थे. इफ that is the only thing. Let me just open my sticky note because that's the only place I know. Yes, so that's the critique. एक्टिविज्म भी इन्होंने नहीं की, बहुत पीसफुल तरीके से ये अपना लिबरल फेमिनिज्म की मूवमेंट को चला रही थी. नो क्लास एनालिसिस, एंड उन्होंने अपनी मेन की वैल्यूज़ को यूनिवर्सल वैल्यूज़ कंसिडर कर लिया कि जो मर्द करते हैं बस हमें वही करना है. इसके अलावा भी और वैल्यूज़ होती हैं जो शायद मेन कर भी ना रहे होते उस वक्त, बट दे सेड नहीं, जो वो कर रहे हैं वही हमने करना है. सो आई मीन व्हाई कंसिडर मेन्स वैल्यूज़ यूनिवर्सल? बहुत सारी और चीज़ें हैं जिसको आप देख सकते हैं, लेकिन उन्होंने देखने की कोशिश नहीं की. सो दिस इज़ हाउ लिबरल फेमिनिज्म इज़, दैट दे टारगेटेड men's values as universal values. They didn't care about the class differences. They didn't care about activism. All they cared about were
equal opportunities जो discrimination से उनको नहीं मिल रहे थे. So is the idea of liberal feminism clear to you all? We are talking about liberal feminism over here. अगर आप लोगों को liberal feminism की समझ आ गई है, then I'll move on to the next one, because it is possible कि किसी को कुछ समझ ना आई हो, so I can actually target that. So if everyone is okay, then I'll proceed to the next one. Liberal feminism was one sort of a feminism जिस पे औरतों ने struggle की for getting their rights and opportunities. So if it comes in the paper, you just have to write whatever I said. Okay, if you guys can comment, then I'll proceed to the next feminism type or theory that you can say. I think all right, next we have is, if I go back to the figure, this was liberal feminism. This was a very sweet kind of a feminism. इसके against आती है radical feminism. Radical feminism is a very hyperactive sort of a feminism theory. Either they talk about activism. They say that everything that is at fault in this universe is because of men. मर्द ही नहीं होंगे तो ये सारे मसले ही नहीं होंगे. That is how radical feminists are, right? तो उसके लिए उन्होंने कहा कि सारा कुछ मसला जो है वो मर्दों का है और पेट्रियार्कल सोसाइटी है हमारी, जिसकी वजह से हम कामयाब नहीं हो रहे. एंड इसकी एक ही तरीका है कि हमारी ऑप्रेशन ख़त्म हो जाए, एंड दैट इज़ रेवोल्यूशन. रेवोल्यूशन आए, औरतों को राइट्स मिलेंगे, एंड दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू राइज अप. हम लोगों की बेसिकली दे वर मोर इनटू द टॉपिक ऑफ बॉडीज, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, आपकी सेक्सुअलिटी, आपकी कंट्रोल, मोबिलिटी, के वेयर इज द वुमन गोइंग, व्हेन इज शी कमिंग बैक, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. ठीक है, ऑल दोज रोल्स, रिप्रोडक्टिव रोल्स में when do we have to have a child, etc., everything was in control of a male gender, right? And every of the policy that was being decided about abortion and everything else, that was decided by a group of male members. So that is why radical feminists actually fought that everything that we are facing nowadays is because of the male gender. So we should not let them decide about our own reproductory organs, our control, mobility, मैं कहाँ जा रही हूँ, etc. So they said that we should be in charge of answering, etc. So ये oppression, patriarchy की अगर radical feminism आ जाता है तो you're gonna write that it was the patriarchal society जिसकी वजह से सारा कुछ हो रहा था. अच्छा, इसमें बेसिकली वो ये भी कहते थे कि रेप, वायलेंस एंड पोर्नोग्राफी आर मेथड्स थ्रू विच मैन मेंटेन पावर ओवर वुमेन. दिस वाज सेड बाय वर्किंग इन 1981. एंड साथ रोजमेरी टोंग ने 2 ग्रुप्स बना दिए थे रेडिकल फेमिनिस्ट्स के, एक लिबर्टेरियन थी और एक कल्चरल थी. आई विल टेल यू कि इन दोनों में फ़र्क क्या है, बट दैट्स ऑल. और इन्होंने भी क्लासेस को अपनी फेमिनिस्ट थ्योरी में एलिमिनेट कर दिया था. इन्होंने क्लासेस को डिस्कस नहीं किया था कि कोई औरत अपर क्लास में है तो वो क्या चैलेंजेस फेस कर रही है, जो मिडिल क्लास में वो क्या फेस कर रही है, और जो लोअर क्लास में वो क्या फेस कर रही है. सो दैट वाज एन इशू हियर एज वेल. इफ आई टॉक अबाउट रेडिकल फेमिनिज्म ब्लेम्स द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वुमेन ऑन मेन. सारा खाता ही मर्दों के ऊपर उन्होंने डाल दिया था. एंड दिस सेड दैट इट इज प्राइमरीली मेन हु हैव बेनिफिटेड फ्रॉम द सबऑर्डिनेशन ऑफ वुमेन, और वुमेन को एक ऑप्रेस्ड ग्रुप बना दिया था. और उन्होंने कहा जी सोसाइटी इज पेट्रियार्कल एंड इट इज डोमिनेटेड एंड रूल्ड बाय मेन. मेन आर द रूलिंग क्लास एंड वुमेन आर द सब्जेक्ट क्लास. सो उस पर 2-3 ये लोगों ने जो किया है, एंड्रिया ने जो बोला 1981 में, यू कैन ऑलवेज कोट दैट डाउन इन योर पेपर. एंड देन ये जो 2 रेडिकल फेमिनिस्ट ग्रुप्स उन्होंने डिफाइन किए हैं उसको आप देख सकते हैं. दैट उन्होंने कहा जो रेडिकल लिबर्टेरियन फेमिनिस्ट थे,
They believe that it is both possible and desirable for gender differences to be eradicated or reduced and aim for a state of androgyny in which men and women are not different. वो लिबर्टेरियन फेमिनिस्ट ये कहते थे, बट कल्चरल फेमिनिस्ट ये कहते थे कि नो, मर्दों से ज़्यादा औरतों की सुपरियोरिटी हो. दैट्स ऑल दैट यू हैव टू मेंशन इन योर पेपर. से ज़्यादा इसके अंदर नहीं जाना, ठीक है. सो इसके अलावा और फेमिनिस्ट, रेडिकल फेमिनिस्ट कहते थे सेपरेट कर दो, सेपरेटिज्म. दैट्स इफ औरत जो है वो बाहर जाएगी एंड हाउस होल्ड्स जो है मर्द संभालेंगे. सो दिस इज हाउ यू नो दे केम अप विद सो मेनी आइडियाज. बट बड़े एक्सट्रीमिस्ट काइंड ऑफ रेडिकल फेमिनिस्ट मूवमेंट्स थी, एक्टिविस्ट थी. सो इसमें भी क्लास एनालिसिस नहीं था. सो इफ रेडिकल फेमिनिज्म कम्स इन, यू हैव टू राइट ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स इन द बेस्ट वे पॉसिबल, नॉट लाइक इतना छोटा सा, बट इन योर ओन वर्ड्स, एंड यू एक्सप्लेन दैट. यूजुअली डिफरेंसेस आते हैं कि लिबरल फेमिनिज्म में क्या है, रेडिकल फेमिनिज्म में क्या है. सो यू जस्ट नीड टू नो about that. If we are clear about both of them, liberal feminism and radical feminism, please let me know. I'll move on to the next one. I know it's a bit dry. This lecture is usually a bit of a cramming one, जिसमें आप liberal के थोड़े से points को cram करते हो, radical के थोड़े से points को cram करते हो. But if आप एक छोटी सी figure बना लो, जैसे ये colorful figure बनी हुई है, आपको इस topic को दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. That is the beauty of it. मैं just okay. Okay, I'm back now. I think there was an issue and I'm back now. All right, so are you guys getting the idea of liberal feminism and radical feminism? If yes, please let me know ताकि मैं आगे जाऊँ. मैं concepts की bombardment नहीं करना चाहती आप लोगों के ऊपर, unless or until you guys don't realize that what's happening. Why is this disconnecting? If you have any questions, please let me know. My internet is messing up right now, but it's going to be fine, I guess. I think the pinned comment है उसके बाद ये. Okay guys, should I move on to the next theory, because आप लोग, मुझे लगता है या तो कुछ भी समझ नहीं आ रही है, सब समझ आ रही है. So anyways, okay, let's move on to the next one. The third and the most important one after radical and liberal is Marxist feminism. Marxist के बारे में आप बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे हर जगह. That's something that you're going to study in almost every subject, like international relations, sociology, gender studies. So Marxist here basically believes in the concept of communism. Capitalism of communism की एक छोटी सी मिसाल ये है कि कैपिटलिज्म में एक क्लास जो है वो कमाती है और खाती है और एंजॉय करती है, और बाकी सारी लोअर क्लासेस लेबर वर्क करती हैं और इतना ज़्यादा पे भी नहीं उनको किया जाता कैपिटलिस्ट मार्केट के अंदर. बट कम्युनिज्म के अंदर ऐसा नहीं होता. एवरीवन the government basically somehow has the control over the things. State owned होता है बहुत सारी चीज़ें, and everyone gets a bit of the share. So a specific part of the society is not controlling the entire money. So Marxist अब feminism के ऊपर क्या कहते हैं, वो इन तमाम प्रॉब्लम्स को रिलेट करने के लिए कहते हैं कि आपकी कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, इस वजह से सारे मसले मसाइल आ रहे हैं. अगर आप इस सोसाइटी को कम्युनिस्ट कर दें तो सारी चीज़ें मसले मसाइल सॉल्व हो जाएंगे. दिस इज व्हाट मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म डिपेंड्स ऑन. सो इन कम्युनिस्ट सोसाइटी मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट बिलीव दैट जेंडर इनइक्वालिटीज विल डिसअपीयर, एंड ये सब तो ऐसी बातें उन्होंने लिखी हुई हैं. एंड जब वुमेन सबऑर्डिनेट होती है तो कैपिटलिज्म उस चीज़ को बेनिफिट करता है. वुमेन एंग्री होती है, वो अपने एंगर को स्वॉलो कर लेती है. मैन बेसिकली आर मोर सेंसिटिव
to differences between women who belong to the ruling class and the proletarian families. Men भी sensitive हो जाते हैं upper middle and upper class के women के मुताबिक. So basically आप जब अपनी capitalist market को communist market में convert कर देंगे तो ये सारे मसले मसाइल solve हो जाएंगे. This is what Marxist feminism कह रही है कि capitalism rather than patriarchy is the principal source of women's oppression. So this is the main thing जिसके ऊपर वो बहस कर रहा है इसके ऊपर. And the details are also written here, Marxist feminism की, that capitalism rather than patriarchy is the principal source of women's oppression and capitalist as the main beneficiaries. So बाकी सब मैंने आपको ऊपर बता ही दिया है एंड यू कैन एक्चुअली राइट दैट डाउन. अच्छा, तो लिबरल फेमिनिज्म हो चुका है, मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म भी मैंने आपको बता दिया एंड रेडिकल फेमिनिज्म भी मैंने आपको बता दिया. दीज आर वन द टॉप 3 इंपॉर्टेंट वंस जो पेपर्स में भी आती हैं और वैसे भी बार बार डिस्कस की जाती हैं. इफ़ यू हैव एनी इशूज़ इन दीज 3 प्लीज़ लेट मी नो सो दैट वी कैन प्रोसीड ऑन टू द अदर वंस. हमने अभी तक 3 चीज़ें कवर की हैं, लिबरल, radical and Marxist feminism. Alright, these are the 3 most important theories जिसके ऊपर आप लोग पढ़ भी सकते हैं from the link I just posted. अच्छा, उसके बाद Marxist feminism के बाद ये कार्ल मार्क्स जो है उसने क्लास की एनालिसिस की थी कि कैपिटलिस्ट क्लास है, मार्केट है और कम्युनिस्ट क्लास है, तो उसकी बेसिस पे उसने यहाँ भेजी थी. लेकिन वही बात है, इसकी गलती है कि इसने बाकी सारी चीज़ों को इग्नोर कर दिया था. वो इसका क्रिटिक आप बनाएंगे, राइट. अब उसके बाद मेरे हिसाब से तो पोस्ट मॉडर्न नहीं, साइको एनालिटिकल फेमिनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है. अब साइको एनालिटिकल फेमिनिज्म इज़ हेयर एंड साइको एनालिटिकल फेमिनिज्म के ऊपर आप गूगल कर लें, इमेजेस में जाएं, बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं. व्हाट आई अंडरस्टैंड फ्रॉम साइको एनालिटिकल फेमिनिस्ट थ्योरी इज़ दैट आपकी जितनी माइंड सेट होता है वो आपके होम इंस्टीट्यूशन और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के थ्रू डेवलप हो जाता है व्हेन यू आर रियली यंग, एंड व्हेन दैट हैज़ बीन डेवलप्ड at a really early stage, at a young stage, and that goes on till you're actually an adult. So this is what they say, that बचपन में जो चीज़ आपके दिमाग में डाल दी जाती है, that is the major factor of the gender differences that we have when we are adults. So women and men develop gendered personalities as the outcome of separating from mother. अब मैं इसका बताती हूँ रीज़न वाई दे हैव रिटन दिस डाउन. वुमेन आर प्राइमरी केयर गिवर्स, मेन सेपरेट फ्रॉम मदर एंड डिवैल्यू फेमिनिटी टू डेवलप मैस्कुलिनिटी इन एब्सेंस ऑफ मेल रोल मॉडल. सो once they detach from mother, once they are growing up, men develop this feeling that in order to hide their emotions, they try to be more strong and they try to go towards such emotions. Whereas women, they know that, you know, my mother is like this, so I'm also going to be like this and I'm going to be a caregiver. So this is psychoanalytical feminism theory that says that it's developed at a really early stage, and then women have a direct model of femininity and connectedness and submit to males to stay connected. So in order to stay connected, a woman subjugates or submits to the male member. This is how the psychoanalytical feminist theory says. अब इसमें एक बंदा है जिसने अपनी एक टर्म बोली थी, that is called Oedipus complex, right? It's a concept of psychoanalytical theory जिसको coin किया था सिगमंड फ्रूट ने. और ऑडिपस कॉम्प्लेक्स में वो यही बोलता है कि इसमें कंपटीशन आ जाता है व्हेन यूर अ चाइल्ड एंड आपका कंपटीशन आ जाता है सेम जेंडर के साथ. इफ इट्स योर फादर, इफ इट्स योर ब्रदर, दैट व्हाई इज ही गेटिंग अटैच टू माई मदर और व्हाई इज ही देयर और व्हाई आर दे लिस्टिंग. सो जिसकी वजह से भी आप एक कॉम्प्लेक्स डेवलप कर जाते हो कि नहीं, इट्स यू कैन सी दिस इमेज लाइक सेम सेक्स के साथ आपका एक कॉम्पिटिशन डेवलप हो जाता है, वेयर एज ऑपोजिट सेक्स के साथ आप एक कनेक्टेडनेस रखना चाहते हैं, राइट. सो जेलसी एंड एंगर आ जाती है सेम सेक्स पेरेंट के साथ, और फीलिंग्स ऑफ डिजायर फॉर हिज ऑपोजिट सेक्स पेरेंट, दैट इज हिज मदर. सो दिस इज कॉल्ड एन ऑडिपस कॉम्प्लेक्स, जो एक बच्चे के अंदर, मेल जेंडर के अंदर खास तौर पे आ जाता है एट अ रियली अर्ली स्टेज. दिस वाज कॉइन्ड बाय सिगमंड फ्रूड. इफ यू एक्चुअली राइट दिस डाउन, इट्स गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ मार्क्स, एंड जिसकी वजह से ये सब होता है. सो साइको एनालिटिकल फेमिनिज्म में बचपन से ही जो आपके दिमाग के अंदर, साइक मीन्स योर ब्रेन, वट एवर इज एम्बेडेड इन योर ब्रेन एट अ रियली अर्ली स्टेज, this actually goes on there. So this is psychoanalytical feminism. Yes, Ms. Pa, what issue do you have in liberal feminism? Please write that down. I'm waiting, because we have covered liberal, radical
Marxist and psychoanalytical feminism. So please let me know what issues do you have. अगर आपके issues हैं मैं वो address कर देती हूँ पहले. I have no issues in that. So I'll give you like a minute or two to write your issues down. I'm waiting. If you have any issues, you can just let me know. Okay, if I mean like you have issues, you may comment on it and then tag me here, and then I'll see how, I mean, we can sort things out. Okay. Okay, next we have, if we see the syllabus we have is, we are done with liberal feminism, we are done with radical feminism. आपको कुछ समझ नहीं आ रही, please open the link, read it again. ये बहुत बच्चों वाली चीज़ें हैं एंड इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी. एंड देन मार्क्सिस्ट या सोशलिस्ट एक चीज़ होती है, एंड साइको एनालिटिकल फेमिनिज्म. मेंस फेमिनिज्म, इट्स अ वेरी सिली कॉन्सेप्ट, इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट एज वेल, यू कैन ऑलवेज सर्च फॉर इट. मेंस फेमिनिज्म सेज दैट मेन के भी मसले मसाइल होते हैं, उसके ऊपर कोई बात नहीं करता. इट वॉज बेसिकली अ काइंड ऑफ लाइक यू कैन से रिटेलिएशन टूवर्ड्स फेमिनिज्म, एंड दे ट्राई टू मेक देयर ओन theory out of it कि लड़कों के मसले मसाइल हैं, men also have issues, etc etc. So they started naming it men's feminism, and I don't know where did I search that, but men's feminism was there. So ये काफ़ी important चीज़ नहीं है, but you should always be prepared about anything that can come here. So they were more I mean like towards their own you can say problems. ये हमारे भी मसले मसाइल हैं. Let me just read it out from here if I see इधर कुछ solve हुआ है या नहीं. I'll link down something about men's feminism, and postmodern feminism is something that is here as well. And postmodern feminism and difference feminism, they do not see women as a single homogeneous group, and they critiqued preceding feminist theory as being part of the masculinist enlightenment project. Okay, इनको बहुत मसले मसाइल थी पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म को इन तमाम चीज़ों से, राइट. एंड they basically said that ये एक ग्रुप नहीं है, और भी चीज़ें हैं. if you know about queer theory you can actually compare post-modern feminism and queer theory. वो basically ये बात करते हैं कि, let me go over here, they do not see women as a single homogeneous group, right. एंड ये सब क्रिटिसाइज किया था इन्होंने. एंड पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म में ज़्यादा लैंग्वेज की बात होती है, डिस्कोर्सेस की बात होती है, एंड द रिलेशनशिप बिटवीन पावर एंड नॉलेज रादर देन पॉलिटिक्स एंड अपॉर्चुनिटीज़. इसके ऊपर ख़ास मुझे कुछ डेटा आज तक ज़िंदगी में मिला नहीं है. आई ट्राइड रिसर्चिंग ऑन इट एज वेल, बट पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म में मुझे ज़्यादा डेटा मिला नहीं है. हाउएवर दे ऑलवेज से कि जी वुमन एक ग्रुप नहीं है जिसको आप ग्रुप कहते हो, इसमें आगे भी बहुत सारी सेक्सुअलिटीज़ आती हैं, आगे भी बहुत कुछ आता है जिसकी बेसिस पे आप उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. एंड कोई यूनिवर्सैलिटी नहीं है जैसे आप बोलते हैं कि जी ये इस तरह की वुमन है, ये क्लास है, ये है. एंड दे ऑल्सो सेड कि इट्स बिटवीन पावर एंड नॉलेज रादर देन पॉलिटिक्स एंड अपॉर्चुनिटीज़. इसके ऊपर मुझे कुछ मिला तो आई वुड डेफिनेटली लेट यू गाइज नो अबाउट पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म. आई एम स्टिल वर्किंग ऑन दैट. आई कुडंट गेट एनी लिंक, सो आई रिसर्च एंड आई सी अ लिंक विद दैट. हाउएवर पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म के ऊपर गूगल भरा हुआ है. इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट ऑफ अ थ्योरी, बट ये वुमेन को एक ग्रुप नहीं कंसिडर करती. दे ऑलवेज से कि और भी ग्रुप्स हैं अवेलेबल, जैसे ट्रांसजेंडर वगैरह होते हैं, आप उस पर क्यों नहीं बात करते. गिव मी अ सेकेंड, लेट मी सी हियर कि अगर इधर से मुझे कुछ मिल जाए. या सो दे बेसिकली एक्सक्यूज मी, where is postmodern theory?
Okay, I'll pinpoint that out. अब ये criticism यहाँ है, I didn't see that over here. The criticism of Marxist वो available है कि उन्होंने ignore कर दिया other sources of inequality such as sexual violence and patriarchal systems. Capitalism से पहले exist करते थे, उसने उसको सरासर ignore कर दिया and then एंड दे ऑल्सो से कि कम्युनिज्म के अंदर भी औरत खुश नहीं है. इसको किसने कहा था कि औरतें खुश होंगी कम्युनिज्म के अंदर? सो दैट्स अ क्रिटिक एज वेल. लिबरल के ऊपर भी आपकी क्रिटिक्स अवेलेबल हैं, रेडिकल के ऊपर भी हैं और डिफरेंस के ऊपर भी क्रिटिक्स अवेलेबल हैं. सो दिस वाज द इंटायर आई मीन लाइक पोर्शन ऑफ CSS जिसके अंदर बेसिकली क्रिटिक भी है, आपकी आइडियोलॉजी भी है, आपकी फिगर भी है कि कौन सी थ्योरी किन चीज़ों के ऊपर बिलीव रखती है और उसके मुताबिक इन तमाम चीज़ों का सोल्यूशन क्या है जो सोशल डिफरेंसेस मेन एंड वुमेन के दरमियान हैं. सो एवरी feminist theory tried to bring its own version of why, what and where is the solution coming from. So did you have an understanding of what I tried to teach here? Was the website helpful? Please let me know so that मैं ऐसी websites लेके आया करूँ आप लोगों के लिए. I know your comments are now visible to me, but they're, I mean like you have issues in liberal. That's all I can see here. Okay. Okay, please let me know if you have any issues in this section of gender studies. I think that I should not proceed to Pakistan movement and gender studies because I think this was a heavy dose for you all for today. Maybe we can have that later next week, half an hour class, because that's going to take hardly 20 minutes or 15 minutes. But I just want to know that whether this was actually helpful for you all. क्योंकि मुझे लगता है ये काफ़ी मुश्किल चीज़ होती है एंड इसको एब्जॉर्ब कर लें पहले, इसको समझ लें पहले. नेक्स्ट क्लास में हम पाकिस्तान की फेमिनिस्ट थ्योरी से स्टार्ट कर लेंगे और उसके साथ साथ हम स्टार्ट कर लेंगे अपने बाकी हेडर्स को, क्योंकि जेंडर स्टडीज इज़ एन ईजी सब्जेक्ट. इट्स ऑल अबाउट हाउ यू पुट everything in words and how you justify that दुनिया में क्या हो रहा है. So please let me know if you have any questions regarding today's lecture. I might be able to help you out and then we'll wind up the lecture with some other questions if you have. Okay, someone is just liking the video, but so I guess nobody has questions and everyone understood everything. So the last words that I'd like to mention here, my concluding remarks are that try to make small short sticky notes जो आप जहाँ भी आपने लगाने हैं लगाएं, अपनी पेजेस के ऊपर, अपनी बुक्स के ऊपर, आपका अपना फोल्डर है उसके ऊपर. Try to have this app, it's called KHEL. It's on Play Store. It's I mean like Play Store, Android, Apple में भी होगा. QHEL में आप पाकिस्तान क्लिक करेंगे तो सारे न्यूज़पेपर्स पाकिस्तान के जो हैं उनके लेटेस्ट आर्टिकल्स रोज़ बरोज़ लाइक अपडेट होंगे. लाइक अभी जो आर्टिकल किसी ने पब्लिश किया है वो QHEL में टॉप में आ जाएगा. सो इट्स टॉप टू बॉटम अप्रोच. टॉप में आया, फिर एक और आर्टिकल आया, वो ऊपर आ गया, उसके वो एक और ऊपर आ गया. सो ऑल द न्यूज़ आर्टिकल्स दैट आर बीइंग पब्लिश्ड इन वेरियस न्यूज़पेपर्स वो आपकी इस ऐप के अंदर सामने विजिबल होंगे. तो आपको हर न्यूज़पेपर में क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है. डॉन, द न्यूज़, every newspaper is in this app. So I personally trust this app for reading articles क्योंकि sometimes any newspaper can have a good article. आपको लेकिन टाइम तो नहीं है आपके पास कि आप हर न्यूज़पेपर को खोल के पढ़ें. So that is why इसके अंदर viewers और यूज एक व्यू ऑप्शन भी है. अगर मैंने और साथ बहुत सारे लोगों ने एक आर्टिकल वेबसाइट पे व्यू किया है तो नीचे ऑप्शन आ जाएगा कि ये आर्टिकल बहुत सारे लोगों ने व्यू किया है, जैसे लाइव वीडियो आप व्यू करें. So
उसकी वजह से आपको पता चल जाएगा कि ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको आप फौरन से पढ़ लेंगे. सो दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स अबाउट दिस ऐप कि आपको पता चल जाएगा कि ये आर्टिकल बहुत ज़्यादा आज लोगों ने पढ़ा है, दिस हैज़ समथिंग इंपॉर्टेंट इन इट गोइंग ऑन. नॉट एवरी आर्टिकल इज़ इंपॉर्टेंट फॉर यू. आर्टिकल रिलेटेड टू करंट अफेयर्स, व्हाट्स हैपनिंग इन आवर बजट, व्हाट्स आई एम श्योर पाकिस्तान अफेयर्स में बजट के ऊपर ज़रूर एक सवाल कोई आएगा, इकोनॉमिक crisis जो हमारे इस वक्त चल रहे हैं. एंड देन ऑल्सो मेक श्योर दैट यू लाइक सम ऑफ द न्यूज़ चैनल्स एंड ऑथर्स जो भी आपको पसंद आते हैं. मोहित पीर ज़्यादा है आपके पास, वो एक शाहजेब खान ज़्यादा है. आप उनके शोज़ देखें और उनका एनालिसिस देखें. आपकी अंग्रेज़ी ठीक होगी, आप उनका एनालिसिस देख रहे हैं, यू गोना हैव ग्रेट स्कोर इन दीज जनरल सब्जेक्ट्स. और बाकी सब्जेक्ट्स के लिए प्लीज़ रोज़ रोज़ पढ़ें, थोड़ा थोड़ा सा पढ़ें. डोंट जस्ट से कि मैं नवंबर को जाके ये महीने में जाके अपना इस्लामियात शुरू करूँगा. नो, प्लीज़ मेक श्योर दैट अक्टूबर मिड या अक्टूबर के एंड या नवंबर तक आपके सब्जेक्ट्स कवर हो जाएं. एंड प्लीज़ डोंट फोकस ऑन दी एमसीक्यूज पार्ट. एमसीक्यूज पार्ट बिल्कुल एंड में जाके करें. फोकस ऑन द सिलेबस. आपका सिलेबस प्रिंट होना चाहिए. मुझे नहीं पता लोग कैसे ऑनलाइन सिलेबस देख के पढ़ते हैं. आपके सामने होगा, टिक क्रॉस करें उसको, उसके सामने क्वेश्चंस लिखें जो आपको समझ नहीं आ रहे. एंड ट्राई टू अप्रोच वेर एवर यू स्टडी. आप अकेडमी में पढ़ते हैं तो टीचर्स से जाके पूछें, आप ऑनलाइन किसी से पढ़ रहे हैं उससे पूछें, आप ग्रुप्स में पूछें, anywhere you want, but keep hustling and keep studying. And gender studies के लिए कोई बुक बेस्ट नहीं है, मैं किसी बुक से नहीं पढ़ती. ये सब कुछ ऑनलाइन खुला हुआ है एंड आपको थोड़ी थोड़ी ऑनलाइन सर्च करनी है जिसके ऊपर आप करेंगे. उसके अलावा जेंडर स्टडीज़ की जो रिकमेंडेड बुक्स हैं उसमें से भी थोड़ी थोड़ी चीज़ें ही आप ढूंढ सकते हैं. सो मैं उस पर भी कुछ खास कमेंट नहीं कर सकती. Which source can be used for MCQs. MCQs के लिए काफ़ी सोर्सेज हैं, काफ़ी ग्रुप्स हैं. आई एम श्योर जब आपकी जर्नी आगे प्रोसीड करेगी तो यहाँ काफ़ी लोग MCQs के वो फोल्डर्स डाल देंगे. लेकिन उसके अलावा नए MCQs भी आ जाते हैं. सो देयर इज नथिंग दैट यू कैन डू अबाउट इट. येस, फॉर ऑप्शनल्स आई ट्रूली बिलीव कि कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिसके MCQs रिपीट होते हैं. मतलब अगर 20 MCQs हैं तो 8-9 पास पेपर्स के रिपीट होंगे, बट बाकी सब नए आएंगे. तो इसलिए अपनी तैयारी पूरी रखें और उसके बाद लास्ट बिल्कुल डेज में जब आप रिवाइज कर रहे हो तो उन दिनों में वो MCQ की फोल्डर खोलें जो यहाँ पोस्ट कर देगा कोई ना कोई, आई एम श्योर. एंड देन आफ्टर दैट आप उसको गो थ्रू कर दें. You're welcome. I guess that nobody has questions. Feminist theories are done for today. Hardly हमारी 2-3 lectures और होंगे and gender studies is going to be winded up from here. So खुश रहें, अपनी तैयारी करते रहें, अल्लाह ताला से connected रहें, लोगों की help करें. आप बेशक एस्पिरेंट्स होंगे लेकिन there are so many people who still need your help. So keep on helping others. If you're working, please अपनी जॉब मत छोड़िएगा, साथ साथ जॉब भी करते रहें. Do not put all the eggs in one basket, as one of my colleague said after she also cleared CSS. तो उसने यही कहा था, सारी चीज़ें इसके अंदर नहीं डाल के रखते. अब बाकी और पोस्ट भी देखें, FPSC की अभी और जॉब्स आई हैं उसको देखें, PPSC की इतनी जॉब्स आई हैं कल उसको देखें. Keep on applying for various jobs and keep on working hard for anything that you can do for this country. लाजमी नहीं है कि आपकी एक जगह से बंद हो जाए कोई अपॉर्चुनिटी तो दूसरी अपॉर्चुनिटी आपने लेनी ही नहीं है. प्लीज़ गो ऑन एंड अप्लाई फॉर वेरियस टेस्ट्स, वेरियस पोस्ट्स एंड कीप ऑन वर्किंग हार्ड. अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे. गुड नाइट. अल्लाह हाफिज़. टेक केयर एवरीवन.